share knowledge and experiences about yoga with all of us. हम लोग ये रेकरिंग जो मीटिंग रख रहे हैं इसको स्टार्ट करेंगे विथ ए वैदिक चैंटिंग। संगचध्यं संबोधध्यं संभो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। वेलकम यू ऑल अगेन योगा एंड हैप्पीनेस के इस पेज पे। जो लोग अभी लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं अबाउट योगा, क्योंकि योग तो हम लोग सभी अभ्यास करते हैं अपने अपने क्षेत्र पे, अपने डायमेंशन पे, लेकिन क्या हम लोग सही जानकारी के साथ योग अभ्यास कर रहे हैं, ये सोचने का एक अवसर होना चाहिए। अभी देख सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, योगा इंस्टीट्यूट, वो they are promoting yoga as in scientific approach। तो वही साइंटिफिक अप्रोच के अंदर में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि योग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों योग का अभ्यास सभी व्यक्ति को घर घर में अभ्यास करना चाहिए और कैसे अभ्यास करेंगे उसके संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। योग का अभ्यास प्राचीन काल से होते हुए आ रहा है और ये एक एंशिएंट साइंस है जो टुवर्ड्स द मॉडर्न वर्ल्ड सभी के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इसी संदर्भ में मनाया जाता है। तो सभी, क्योंकि सभी लोग योग का अगर अभ्यास शुरू करेंगे तो उनका हेल्थ एंड वेलनेस बहुत ज्यादा इनहेंसमेंट रहेगा। अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में देख रहे हैं जो भी योगा एक्सपर्ट्स है, योगा गुरु है, योगा जो भी प्रैक्टिशनर्स है, वो खुद बोल रहे हैं हम योग अभ्यास करते हैं और विथ मॉडर्न मेडिसिन बहुत जल्दी रिकवरी हो रहा है इन योगा इन पैंडेमिक सिचुएशन। और कोविड कोई किसी का अगर पॉजिटिव भी आ जाते हैं तो भी वो भी बहुत इजीली वो सिचुएशन से बाहर उभर के आ पा रहे हैं। उनका सिचुएशन उतना ओर्जन नहीं हो रहा, उतना ज्यादा दिक्कत में वो लोग, उनका हेल्थ हैम्पर्ड नहीं हो रहा। सो इसलिए योग का अभ्यास, लेकिन योग कैसे अभ्यास शुरू करें? योग का अभ्यास क्या वो 1 घंटा हम लोग योग अभ्यास करेंगे उसी से ये कंप्लीट हो जाता है टास्क? वो शुरुआत है। क्यों शुरुआत बोल रहे हैं? कोई एक व्यक्ति अगर उनको बहुत ज्यादा हम लोग अगर फिलोसॉफिकल थॉट के अंदर में जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। फर्स्ट हम लोग जो फर्स्ट स्टेप जो कर सकते हैं, आप कोई भी योगा इंस्ट्रक्टर जो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके पास जाके आप उनसे योगा सीख सकते हैं। योग अगर आपको सीखना है तो सही जगह से, सही गुरु के पास, ये है गुरुमुखी विद्या। गुरु शिष्य परंपरा से योग को सीखा जाता है। ऐसे ही हम लोग इंडिविजुअल अगर अटेंशन नहीं रहता है तो हम लोग कभी भी 100% योग को समझ ही नहीं पाएंगे। दिस इज नॉट अ मेडिसिन। दूसरा एंगल से ये मेडिसिन भी है। ये मेडिसिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज अगर आप योग को एज ए मेडिसिन, अच्छा ठीक है सिर दर्द हो रहा है, 2-4 बार अनुलोम विलोम कर लिया और सिर दर्द थोड़ा ठीक हो गया, दिस इज नॉट लाइक दैट। ये पहले से अगर हम लोग अभ्यास करते जाएंगे तो सिर दर्द कभी होगा ही नहीं, माइग्रेन का प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं, बैक पेन का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर हम लोग जैसे जो भी हमारा देश कृषि प्रधान है तो इसमें जो चाषी हाल चलाते हैं उनको हलासन भी करना होगा तो तब जाके उनका बैक पेन ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं हम लोग नहीं सोच सकते हैं अच्छा ठीक है जो फार्मर्स है, हुअर वर्कर,
उनको कभी भी योग का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन भाग दौड़ में कटते हैं। उनका फिजिकल एक्टिविटी इतना 7 से 8 किलोमीटर वो पैदल चलते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, फिर भी योग का अभ्यास जरूरी है। क्योंकि योग कभी भी एक इंटीग्रेट करते हैं टू द बॉडी एंड माइंड। शरीर और मन को ये एक सूत्र में बांधते हैं। जैसे योग का जो डेफिनेशन में फिर हम लोग अगर जाते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन। तो ये आत्मा के साथ जो परमात्मा का मिलन कब होगा? जब हम लोग जान पाएंगे हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो इसके संदर्भ में हम लोग योग अभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे घर में बैठ के हम लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम लोग योग अभ्यास कर सकते हैं। अगर हम लोग सही से योग को सीख लेते हैं, सही योगा इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर या योगा गुरु या योगा मास्टर के पास से उनका सानिध्य में जाके अगर योग को सीखते हैं, तो जैसे योगा एट होम, तो तब हम लोग घर में जाके योग खुद ब खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और योग के अंदर में कोई भी ऐसा चीज अभ्यास नहीं करना चाहिए जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस है। We need to make it simplified. You should practice asana, pranayama in simplified format. You do not need to go for any tough asanas. Maybe you can get some physical hazard. So you should try to indulge yourself in common nominal practice. If you does, then you can see that there is enormous happiness you can feel in your body, mind, and in the surrounding also. हर एक व्यक्ति अगर with the divine knowledge वो रहेंगे तो वो डिवाइनिटी के साथ रह सकता है। जैसे आत्मा के साथ परमात्मा, परमात्मा के साथ क्यों रहेंगे? बिकॉज ही इज एक्स अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये जो आनंदमय स्थिति में अगर हम लोग रह सकते हैं, दैट इज द अल्टीमेट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स डिजायर। तो इसी संदर्भ में हम लोग ये यात्रा को आगे बढ़ाएं। योग के बारे में तरह तरह के जो भी आज चर्चा होगा, इसके बारे में हम लोग अगर चर्चा सुनते हैं तो कैसे हम लोग योग एग्जैक्टली अभ्यास कर सकते हैं, कैसे इनको आगे लेके जा सकते हैं, कैसे हम अपना शरीर को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हुए हम लोग इस योग को अभ्यास कर सकते हैं, उसके बारे में एक आइडिया आ जाए। क्योंकि जब जैसे योग आसन अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा जितना भी मेजर ह्यूमन सिस्टम्स है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो और इस शरीर का कीमत क्या है? इट्स प्रीसियस, प्राइसलेस है। आप कोई भी अंग अगर आपका खराब हो जाते हैं तो आप उनको ऐसे ही दुकान में जाके या जैसे हॉस्पिटल, जैसे फॉर ह्यूमंस वी कैन गो फॉर हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में जाके वो चेंज करके नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, मेरा हाथ में मेरा मासल में पेन हो गया तो थोड़ा हाथ का मासल थोड़ा चेंज करके लेके आ जाए, नो। तो इसलिए ऐसे अभ्यास करना होगा सो दैट ये मासल कभी इंज्यूर्ड ना हो। तो इसी हिसाब से हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए। सो सभी को इसीलिए बोलेंगे, जब भी आप योगा अभ्यास कर रहे हैं सावधानी बरतते हुए आपको अभ्यास करना है। कोई आपका फिजिकल लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना है। कोई आपके सामने धनुरासन अभ्यास कर रहे हैं मतलब आपको भी धनुरासन अभ्यास करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। योग कभी भी दिखावा के लिए करना नहीं चाहिए। दिस इज फॉर यू, फॉर योर ओन डेवलपमेंट। आपका खुद का डेवलपमेंट करने के लिए आपको खुद को इसमें आगे उभर के आना है, आपको खुद को अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि इसका जो सूदिंग इफेक्ट है ये आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे, नॉट ए क्वांटिटी ऑफ लाइफ। फिर भी योग में क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी मिलता है, लेकिन जितना भी दिन आप जिएंगे
उतना दिन with the happiness आप जी पाएंगे. Even in the age of 100 years, you can work, you can enjoy the food, everything you can enjoy in this world if you practice yoga. जैसे हम लोग कुछ दिन पहले भी देख सकते हैं, बहुत सारा योगी जो बोल रहे हैं कि their age is 100 years, और मतलब 90 के एफ बहुत सारा ऐसे योग गुरु है जो अभी भी योग सिखाते हैं. तो योग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप प्रोलॉन्ग लाइफ आपको मिल सकता है with the happiness, with the awareness of body consciousness. तो इसलिए आप लोग जरूर योग अभ्यास करें, सही से योग अभ्यास करें. योग गुरु से आप सलाह लेते हुए आपको योग का अभ्यास करना है. हर एक अभ्यास का बेनिफिट एंड लिमिटेशन जानते हुए आपको अभ्यास करना है. क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं, भारत देश क्या पूरा विश्व में सभी लोग योग जानते हैं. अगर किसी को पूछा जाता है do you know yoga, they will say yes, why not? There is some postures and all these things, but the posture is not yoga. Postures is not yoga, nor even pranayama also. This is a tool of practicing yoga to be the ultimate state. So ये जो प्रोसेस है आपको सही से जानते हुए आपको अभ्यास करना है, और अगर आप सही से जान जाओगे तब इसमें आप इनरमस आपको हैप्पीनेस आप क्रिएट कर पाओगे इन योर बॉडी, इन योर माइंड, इन योर एग्जिस्टेंस. आपको तब आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस दुनिया में कभी भी बोझ बन के आप जी रहे हो. और जो भगवान श्री कृष्ण इन भगवत गीता में बोल के गए, योगा कर्मेषु कौशलम, तो आप कोई भी काम अपना जीवन में जो भी आप, you can be a doctor, you can be an engineer, you can be a CA, you can be a corporate person, you can be a software engineer or hardware engineer, you can be a common human being, common person. तो आपको हर एक जगह पे आप खुद सही से आपका जो काम है या आपका जो वर्क है, आपका जो ड्यूटी है, यू कैन फुलफिल. तो इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी नेक्स्ट हम लोग जो हमारा नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन है मिस्टर सोमेंदु मान्ना, उनसे योग के बारे में, योग के संदर्भ में उनकी बात हम लोग सुनेंगे. सो हम सोमेंदु जी को वेलकम करते हैं इन आवर दिस लाइव प्रोग्राम. नमस्ते सोमेंदु जी. आपका पास से हम लोग सुनना चाहते हैं अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर एक्सपीरियंस ऑन योगा एज ए योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. নমস্কার. প্রথমে সিসি স্যারকে আমার প্রণাম আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, এবং উপস্থিত যারা আজকে সবাই শুনছেন তাদেরকে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা, নমস্কার. আজকে আমার টপিক হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ভগবদ গীতা ইন ডে টু ডে লাইফ, সিগনিফিকেন্স অফ ভগবদ গীতা ইন ডে টু ডে লাইফ. দৈনন্দিন জীবনে ভগবদ গীতার তাৎপর্য. যে সমস্ত গ্রন্থ ব্রহ্ম প্রাপ্তির দিকে মার্গদর্শন করে, আমাদের নিয়ে যায়, তাকে বলা হয় প্রস্থানত্রয়ী. এই প্রস্থানত্রয়ী হচ্ছে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ গীতা. উপনিষদকে বলা হয় শ্রুতি প্রস্থান, ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয় ন্যায় প্রস্থান বা যুক্তি প্রস্থান, আর ভগবদ গীতাকে বলা হয় সাধন প্রস্থান. ভগবদ গীতার মাধ্যমে আমরা কিভাবে সাধনা করব তার উপায় জানতে পারি. ভগবদ গীতা হলো মানুষের জীবন সংগ্রামের এক চিরন্তনী গ্রন্থ. মানুষ জীবনে ঘাত প্রতিঘাত থেকে কিভাবে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তার কথা এই গীতার ছত্রে ছত্রে লেখা রয়েছে. জীবন সংগ্রাম থেকে পালিয়ে না গিয়ে কিভাবে আমরা তার মোকাবিলা করব, সেই পথ আমরা ভগবদ গীতা থেকে পেতে পারি. ভগবদ গীতার যে পটভূমি, সেখানে অর্জুন, তিনি একজন পীড়িত ব্যক্তি, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন মনোবেদনা নিয়ে,
আর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বরূপ তাকে তার মনোকষ্ট দূর করে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। বাস্তবিক জীবনে আমরা দেখি যারা মানসিক অবসাদগ্রস্ত তাদেরকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের দিকে আমরা নিয়ে যেতে পারি ভগবদ গীতার পথ অনুসরণ করে। এখানে অর্জুন প্রশ্নকর্তা আর শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তর দিচ্ছেন। এই যে ভগবদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো আমাদের বাস্তবিক জীবনেও অত্যন্ত অপরিহার্য। বিশেষ করে বর্তমান প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা প্রত্যেকেই একটা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। আমরা কোভিড সিচুয়েশনের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, আমরা আমাদের অর্থনৈতিক জীবন জীবিকার সঙ্গে যুদ্ধ করছি। আমরাও কিন্তু এক একজন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সেই শ্রীকৃষ্ণের বাণী স্মরণ করে আমাদেরকে চলতে হবে। তা না হলে আমরা কিন্তু এই জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবো না। প্রথমেই আমি ভগবদ গীতার যে 18টা অধ্যায় তার আমি অল্প কিছু পাঠ নিয়ে এখানে আলোচনা করব, কারণ 18টা অধ্যায়ের সব অধ্যায় এখানে আলোচনা করা হয়তো সম্ভব নয়। তো প্রথমে আমি যেটা আমাদের স্যার কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে আমাদের 3য় অধ্যায় সাংখ্যযোগ, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, অর্থাৎ আমাদের কর্মফলের আশা ত্যাগ করে কর্মে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। এবং এই কর্ম করার সময় আমাদের কি করতে হবে, আমাদের যে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি যাই প্রাপ্ত হোক না কেন আমরা সমান ভাব রাখতে হবে। সমত্তং যোগ উচ্চতে, সিদ্ধা সিদ্ধ সমভূত্বা সমত্তং যোগ উচ্চতে। আর আমাদের কিরকম ভাবে কাজ করতে হবে, কিরকম ভাবে চলতে হবে, আমাদের যোগ কর্মেষু কৌশলম, আমাদের কুশলতা পূর্বক কাজ করতে হবে। তাহলে বর্তমান সিচুয়েশনে আমরা ভেঙে না পড়ে আমরা যার যা কাজ, যার যা কর্তব্য সেই কাজ করে যেতে হবে। এবং এই কাজ করতে করতে আমাদের মধ্যে আমাদের বিফলতা সফলতা যাই আসুক আমরা ভেঙে পড়বো না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে আমাদের স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হবে। আজকে আমরা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা প্রচন্ড মন ভারাক্রান্ত, আমাদের কত প্রিয়জন চলে যাচ্ছে, আমাদের মন কষ্টে ভরে যাচ্ছে, অনেকের জীবন জীবিকা সংকটের মধ্যে পড়েছে, কাজকর্ম হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারাও বাঁচার জন্য কি লড়াই করছে। কিন্তু এই লড়াইয়ের মনোবল তারা কোথা থেকে পাবে? তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থিতপ্রজ্ঞের যে কথা বলেছে যে যেমন অবস্থা থাক তুমি সমত্তম যোগ উচ্চতে, সমান ভাব রাখবে, তুমি সুখ দুঃখ সমান ভাব রাখবে, তুমি সুখেও উল্লসিত হবে না আবার দুঃখেও ভেঙে পড়বে না। আর আমাদের কি করতে হবে, আমাদের ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, আমাদের আসক্তি দূর করতে হবে, তা না হলে আমরা এই জাগতিক দুঃখ দূর করতে পারবো না। আর এই সিচুয়েশনকে তো আমরা কেউ পাল্টাতে পারবো না, এটা থাকবেই। কিন্তু একদিন যেমন দিনের পর রাত আসে, রাতের পর দিন আসে, তেমনি সুখের পর দুঃখ আসবে, দুঃখের পর আবার সুখ আসবে, এরকম চলতেই থাকবে। কিন্তু আমাদের আমাদের স্থির রেখে, স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধি স্থির রেখে, আমাদের সেই ভগবানের মতি রেখে আমাদের নিজের কর্তব্য কর্ম, আমাদের যে যার যা কর্ম সেই কর্ম করে যেতে হবে। এরপর ভগবান কি বললেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে আমাদের আহার বিহার আচার বিচার এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শুধু এগুলো করলে হবে না, আহার বিহার, এবং আহারের ক্ষেত্রে উনি বললেন কি, যে উনি বললেন সাত্বিক আহার গ্রহণ করতে হবে। কেন সাত্বিক আহার গ্রহণ করতে হবে না, সাত্বিক আহার গ্রহণ করলে আমাদের শরীর ভালো থাকবে, আমাদের আয়ু আরোগ্য বল বৃদ্ধি পাবে, শরীর মজবুত থাকবে। বর্তমান সিচুয়েশনে আমরা সেই সাত্বিক আহার গ্রহণ করব, কারণ সাত্বিক আহার বলতে যেগুলো সরস স্নিগ্ধ মধুর, যেগুলো শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর, ইজিলি ডাইজেস্টেবল, সেই সমস্ত ফুড গ্রহণ করব। কারণ আমরা যদি রাজসিক খাদ্য গ্রহণ করি তাহলে আমাদের কি হবে, আমাদের রোগ শোক ব্যাধি আসবে। আমাদের তামসিক খাদ্য গ্রহণ করলে আমাদের কি হবে, আমাদের আমাদের নিদ্রা আলস্য আমাদের এই সমস্ত আচ্ছন্ন করবে। তাহলে আমরা আজকে বর্তমান সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে এটা ভীষণভাবে প্রযোজ্য। আমরা সাত্বিক আহার গ্রহণ করব, যে আহার করলে আমাদের শরীরে ইমিউনিটি বাড়বে। তাহলে সেখানেও ভগবদ গীতা আজকের জীবনে আজকের দিনে কতটা প্রয়োজনীয়।
এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলছেন যে আমাদের শুধু আহার নয়, তিনি বলছেন যুক্ত আহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত স্বপ্ন বোধস্য যোগ ভবতি দুঃখহা। অর্থাৎ আমাদের আহার বিহার নিয়ন্ত্রিত হতে হবে, আমাদের আচার বিচার নিয়ন্ত্রিত হতে হবে, আমাদের নিদ্রা জাগরণ এটাও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। আমরা খুব বেশি ঘুমাবো তাও নয়, আর আমাদের অনেকক্ষণ জেগে থাকবো তাও নয়। তবেই আমরা এই জড়জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি লাভ করব। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে আরো অনেক কথা অর্জুনকে বলেছেন। এইভাবে বলতে বলতে তারপরে তিনি বললেন যে পরিশেষে যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি? মুক্তি লাভ করা, মোক্ষ লাভ করা। তাহলে এটাই হচ্ছে আলটিমেট স্যাটিসফ্যাকশন। সেই মোক্ষ লাভ করতে গেলে, মুক্তি লাভ করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদের ভগবানের শরণাগতি হতে হবে। সেই জন্য লাস্ট যে অধ্যায় অর্থাৎ মুখ্য যোগে তিনি কি বললেন? তিনি বললেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্যং মামেকং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়াস্যামি মা শুচ। অর্জুন, তুমি সকল কিছু ছেড়ে আমার শরণে এসো, আমি তোমায় সকল পাপ থেকে উদ্ধার করব। এবং সেটাই আমাদের মানব জীবনের একটা লক্ষ্য, যে আমরা মুক্তি লাভ করতে চাই। আমাদের এই জীবনে আমরা স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছি না, তারও পথ ভগবান বলে দিলেন যে তুমি আমার শরণাগত হও, আমার শরণাগত হও, আমার শরণাগত হও। সুতরাং এইভাবেই আজকে আমি ভগবদ গীতার আজকে দৈনন্দিন জীবনে যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলাম, চেষ্টা করলাম। আর একটা কথা, আমাদের স্ত্রী বৃদ্ধিতে, আমরা যে ক্ষেত্রে আছি তাদের স্ত্রী বৃদ্ধিতেও ভগবদ গীতা সাহায্য করে। আমাদের মধ্যে কোনো পজিটিভ অ্যাটিটিউড, নেগেটিভ অ্যাটিটিউড মনের মধ্যে যাতে জাগ্রত না হয়, সেটাও ভগবদ গীতা সেই পথ নির্দেশ করে, যে আমরা পজিটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে কিভাবে যে ক্ষেত্রে আছি কিভাবে এগোবো, তার পথ ভগবদ গীতা বলে। অর্থাৎ এখানে যুদ্ধ মানে যে যে পটভূমিটা ছিল সেটা হচ্ছে যে পাণ্ডবের সঙ্গে কৌরবের যুদ্ধ। কিন্তু এই যুদ্ধ শুধু সেই যুদ্ধে জয়লাভ নয়, আমাদের মনের মধ্যে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারকে দূর করে আমাদের অধ্যাত্ম চেতনার বিকাশ ঘটানো। আমি এই কথা বলেই আজকে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। খুব ভালো হয়েছে সোমেন্দু, থ্যাংক ইউ for your this tremendous lecture on modern aspect. तो क्योंकि आज के दिन पे हम लोग जो योग के बारे में जानते हैं या योग के बारे में जो समझते हैं, that is completely different है the ancient time. ये सोचते हुए बहुत हैरानी होते हैं कि आज से हजारों साल पहले कैसे मुनि ऋषियों के द्वारा इतना गंभीर रूप से चिंतन किया गया। They are aware about all this mental exhaustion जो अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी इस पोर्शन को अभी तक टच नहीं कर पाए कि कैसे एक व्यक्ति को उनको बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को प्रोवाइड किया जाए। लेकिन हम लोग अगर योग के संदर्भ में वो चर्चा करते हैं, there is everything how to control your mind, because most of the diseases are comes from that part only, psychosomatic disorder. और जो भी हमारे अंदर में जो डुअलिटीज चलते हैं, ये ऑलवेज इट हर्ट्स अस ओनली, कि हमारे खुद को एक व्यक्ति अपना जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान उनको पहुंचते हैं नॉट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ हिज और हरसेल्फ। कैसे ये उसको खुद को कैसे हार्म करते हैं? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। और स्ट्रेस को कैसे हम लोग रिलीज कर सकते हैं? थ्रू द practicing and following the principles of yoga and this ancient text only. In Bhagavad Gita, it's a tremendous text. कोई भी एक व्यक्ति कोई भी सिचुएशन में वो क्यों ना रह जाए, there is a way to come out from that situation. They can set up their mind how to overcome that mental situation, or
maybe that because अगर हम लोग देखते हैं सिचुएशन व्हेन वी आर इन स्कूल्स, स्कूल में जब रहते हैं एक स्टूडेंट, उनका चिंता का कारण होता है एग्जामिनेशन। व्हाई एग्जामिनेशन चिंता का कारण होता है? बिकॉज ऑफ नॉट स्टडीइंग प्रॉपरली। भगवत गीता में जैसे बताया गया कि योग कर्मेषु कौशलम, कुशलता पूर्वक काम करने, और कैसे काम करें? कर्मण्यवाधिकारस्ते और मा फलेषु कदाचन। कर्म में अधिकार है, कर्म फल में नहीं। सो इफ वी आर इंडल्ज आवरसेल्फ इन दैट काइंड ऑफ वर्क, तो देखेंगे पूरा विश्व अपना अपना काम अगर सही से करेंगे सभी लोग, तो किसी को कोई भी जगह पे कोई भी मतलब किसी के बारे में कोई दोष देने का जगह ही नहीं है। एवरीथिंग विल बी पीसफुल। तो योग ये भी सिखाते हैं। योग सिर्फ आपको कोई एक आसन, कैसे फोरहेड को नी पे टच करवाया जाए, कैसे आपका शरीर बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा बेंड हो सकता है, आप कितना अपना ब्रीथ को कैसे कितना टाइम होल्ड करके रख सकते हैं, ये जैसे फिजिकल डायमेंशन में काम करते हैं, इन मेंटल डायमेंशन में भी योग बहुत अच्छा काम करते हैं। इसीलिए we can see who are practicing yoga only in physical dimension, they have lot of loopholes, and after few days or after few years they are not in the field of yoga. Whereas who are more focused on the spiritual aspect of yoga and traditional and aspect of yoga, they can survive in this field for a long time. Maybe you can think that, okay, why should I know all these things? Because my problem is my back pain. So how to get rid of my back pain, that is the main concern for me. Maybe you have genuine problem, but you have to focus on mental aspect also, root cause of that problem. So maybe that is your, by the stress, you have got stress on your muscles, that's why the muscles are cramping, and that's why you are feeling back pain. Maybe there is written about yuktahar vihar. Yuktahar means balanced food in Bhagavad Gita. In Hatha Yoga Pradipika it says about mitahara. So if you follow the rule of diet, mitahar or yuktahar, then your entire practice will be fruitful. What is mitahar? That is, there is a one sloka from Hatha Yoga Pradipika that susnigdha madhurahar chaturtham savivarjite bhujyata siva samprattai mitahara sauchyate. Means you need to have easily digestible food, and with the mead of ghee and lubricant, and 1/4 part should be vacant all the time. And if you surrender it to Lord Shiva and you are having that food, that is called mitahara. In Bhagavad Gita it says about yuktahar, means regulated food, not overeating nor undereating. So you have to take your food in balanced way. If you take your food in balanced way, so you can see there is enormous amount of happiness, because most of the time we are facing problem with our abdomen related issues, gastric, acidity, indigestion, constipation, IBS, irritable bowel syndrome. All these things will be resolved from your life. So along with Pavan Muktasana, along with some other practices which directly gets stretches on your abdomen region, you should also practice this fooding habit also.
that is mentioned in ancient text. So that's why we saw practice with awareness. If you consider it only for this yoga things is only for physical dimension, then that will be tremendously wrong thing. You have to consider it that this is not only physical dimension, but also it's a complete way of life. Yoga is a way of life. There is a 4 stages in our self, that is Jagrat, Susupti or dream sleep, Sapna or dreaming, and Turiya or that is meditative stage. So this 4, Jagrat means awakefulness. We are awaking. When we are sleeping, there is some phase of sleeping, that is there will be dream will come, and then there will be deep sleep, and after that you can go for in meditation stage. You can feel that Turiya avastha. So in this situation, you should have to indulge yourself. You have to consider in 4 avastha you are practicing yoga, by mentally or by physically. Because if you control your mind, you can control your body also. So we have to indulge ourselves in physical dimension as well as mental dimension. That's why yoga at home and yoga with family. Because if you indulge your family into yoga practice, they will take care about your food. They will not indulge themselves in junk food. They will indulge themselves, which is lubricant, which has nutrients in the food content. Then our life will be very in peace manner, and we'll be happy all the time with our family, with our society. So I would like to Dr. Vendri Roy as our next speaker. So I'm going to welcome her. Yes, Vendri, you are welcome over here. You can start your speech about yoga and how all this humanity can get benefit with the practice of yoga practice. So you have to continue. Thank you, sir. Thank you, everyone. Good evening, all. So today I'm going to start my session. So for that, I'm going to recite Apakaya cha dharmasya sarvadharma swarupini avatar varisthaya Ramakrishnaya te namaha. Very good evening, all of you. Wish you advance happy International Yoga Day. Stay safe, all of you, and try to experience what is yoga. So today, starting off this short speech, I'm going to share something with you that I have made a small presentation that I can share, and I will request Shishir Vishwas sir to give me the permission. Yes, it's given. Okay, sir. Okay. Please let me know whether the screen is visible or not. Screen is visible, right? Yes. Screen is visible. Yeah. So today we will talk about that origin and future of yoga.
What is that? 13.8 billion years ago. Just imagine, close your eyes and imagine 13.8 billion years ago, all the matter in the universe appeared from a single point with immense explosion. And so then it is started to expand, creating space as it is vastly inflated from quantum fluctuation, and energy changed into the particle or matter of matter and antimatters. So what happens? Everything is started to emerging from that single point. And can you guess what is the name of that potential of that creation? What is the name of that pre-creation thing? That is Prakriti. Pre-creation Kriti. So that Prakriti, from Prakriti, everything is started to emerge. From whom it has been started? It is Purusha. After 300,000 years, the nuclei could finally trap the electrons to form an atom. So the consciousness, Purusha, and Prakriti made the very first time Yoga Vidhamneta Pradhana Purusheshwaraha. So from whom it has been derived, he is Pradhana Purush. And the union, once it is made, it is Yoga. This mysterious union of creation and its persistence, preached by the superconscience that was present from the time of its first explosion. And from that point, everything has been pervaded. None other than Krishna. Krishna, that means the attraction towards the source. It is creating some attraction towards the Purusha, towards the source, the supreme consciousness. And rest of the thing is covered with Ananta and Abhayatma. Those are not revealed to the intellect. So once Purusha is coming with the contact of Prakriti, the unknown knowledge that can be realized, that cannot be realized until someone is experiencing the union, unless someone become yogi. So from that point, that cosmic intelligence, everything is under action. They have started to form through the gunas, through the illumination, actions, and ignorances. So they are making the triangle and everlasting loop they are producing, that cosmic ego. So the yogi who is ready to touch the Purusha will be restrained by this domain. So everywhere in the ancient script, it has been prescribed, go beyond this. Then only we can feel the union between the Purusha and Prakriti. Na sato vidyate bhava, na bhava vidyate sato. That means we cannot create anything from nothing. We cannot create. So Prakriti does not mean that the natural visuals, those are coming under our visible spectrum. It doesn't mean that Prakriti. Similarly, yoga
apparently is not the physical exercise and physical action. So yoga is the blending action in between the Purusha and Prakriti. So if someone is able to make that union, he or she is yogi. Next, take a look to the ancient scripts from where they explicitly the meaning of yoga or the root of yoga has been perceived. So we know that practical way to understand the union between creating the potential and the consciousness is termed as yoga. Yoga means not physical exercise. It is a knowledge or it is a process through which that Ananta can be eradicated. So take a look the ancient scripts from where we can get the knowledge of yoga. First, Rig Veda. Though it has been experienced in the year of more than 8,000 years ago, 8,000 BC, but it has been compiled in the year of 1500 BC to 1600 BC, in between that domain. From Rig Veda, we can see that Sadhinam Yogam Inbhati. That means Sadhinam. Sa means he, Dhinam, thought. Yogam, Yog, Invati. That is the way. So he thought about yoga. Yajurveda. So that is the first exemplified version of yoga that can be, we can find out the explicit root of the yoga, we can say rather. Then Yajurveda. In Yajurveda Upanishad, we can say, Aham mannaste. Aham yogamiti mannaste sthiram indriya dharana. Apramattada bhavati yoga hi prabhavapayo. The yoga, it has been scripted over there. Atharva Veda. Atharva Veda, what is saying about yoga? It is also the experienced submission or way of utterance of the primordial sound, which can be pronounced by our bodily instrument, and that lead us to that union. So what is the primordial sound and how our bodily instrument manifest it? Like our lips are not closed, and fold our tongue, ooh, and closing our lips. Apart from this, any other utterance is not possible. So that's why it's the primordial sound. And Atharva Veda and the Upanishad, Atharva Vedi Upanishad, they have scripted that thing as Om is the way to reach to that union. Yoga Vashishta. What Yoga Vashishta says about the yoga. Mana prasamanapaya yogatta vidhiyate. That means it is a way to keep our mind prasamita. That means not inflicted, not infected by the thoughts. So Yoga Vashishta. Next we are coming the lineage that is called Srimad Bhagavad Gita. 200 BC or near about 300 to 200 BC. So it has been compiled. So Bhagavad Gita has scripted three major concepts of yoga. As per the grammatical aspect, they have divided it into three categories. One is Yujir Yoge. Second one is Yuj Samadho. The third one is Yuj Samayame. Yuj Samayame, Sangyamane. So what is Yujir Yoge? The explicit meaning of the Yujir Yoge is Nitya Sambandha. Nitya Sambandha means that we have seen in the Purusha and Prakriti, every time they are making the union with the knowledge. So that's why if there is a plus one, there is a minus one, there, once they're combining, they are making a zero.
So that is Samatvam Yoga. Yogastha Kuru Karmani Sangang Tvakta Dhananjaya. Siddha +1, Asiddhya -1. Samo Utva Samatvam Yoguchyate. So that is every time through knowledge the union is made. Nitya Sambandha Yujir Yoga. Then Yuja Samadhav. What is the meaning of Yuja Samadhav? The grammatical meaning is contemplation and absorption. It has been manifested in the Srimad Bhagavad Gita like Yatra Paramati Chittam Niruddham Yoga Sevaya. So Yoga Sevaya, that means we are working under Chitta. We are limiting our vrittis of Chitta, and from that context, the Yoga Sutra has been derived. So that is absorption of that Purusha through our consciousness, through our subconsciousness, and through work on Chitta. Next, Yuja Samyamane. What is Yuja Samyamane? Yuja Samyamane is the restraining power. Restraining power by acquiring some wealth. What is the wealth? Pashyame Yogamaisharam. In the chapter 9 of Srimad Bhagavad Gita, in shloka number 5, it is given that Pashyame Yogamaisharam. That is the true exemplified. Yoga has been truly exemplified over here as Samyamane. Now the Yoga Sutra. As per Maharshi Patanjali, Yoga Sutra based on working on Chitta stuff and Tadadrishtu Sarupavasthanam. Tadadrishtu Sarupavasthanam means able to see that conscience through the matter. So that is the beautiful, that is the wonderful illustration of Patanjali, that we can see that conscience through the matter, we can penetrate it. Next, 800 C, 8th century C, the most recent text of Brahma Sutra, that is Vadrayan. Etena yoga prayukta means forget about everything. Just do not look about the technical intricacies of yoga union. Practice it and achieve it. Experiences and achieve it. So etena yoga prayukta. Apply it. So these are the ancient scriptures we're talking about what yoga is. The pathfinders guided us towards the union. Those are the pathfinders, realizers, and they have enlightened us through Jnana Yoga from Advaita Vedanta, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raj Yoga, Lay Yoga, Mantra Yoga, lot of yoga. Wherever there is a well-being, it is termed as yoga. Yoga. Gradually, the ultimate science of the liberation, the ultimate science of this union, that was taught only to the scholars from realizers, become available to all. Everyone started practicing. So yoga becomes yoga. So, and every knowledge, the realized knowledge, just confined in the asanas and posture. And the materialistic world just forget about the highest tiers to get to the Angushta Matra Purusha. That Purusha was present at the time of apparently present of the creation, started of everything. We cannot reach to that upper stairs. We are just confined with the physical exercise, postures, perfections, and we are just confined into that domain. So the journey from mindfulness has been transferred into the physical limitation. So yoga
is the union, not only the union between the body and mind. Mind will help us to make a right posture, as well as mind will help us to get rid of the emotion, though it can produce the emotion. So this is the tool through which we can go beyond. So the journey, the brain is the ultimate manifestation of the supreme creation. So it is the tool only. If someone is very well to do the Paschimottanasana, is it our body allowing him or her? No. It is the, what is this? This is the, our lower brain is allowing that person that can coordinate, cerebellum, that can coordinate. The instructions are coming from that domain. Just do and touch your toe. So it is not the muscle flexibility, and muscle flexibility also getting the instruction from here. So what is the future? It is a continuous journey. Purusha gets trapped with the dance of Prakriti. He is trying to get rid of. Prakriti is not allowing. So it is a continuous journey. And how long yoga will exist? Sorry. As a technique, it will continue its journey as a part of evolution until it reached that source. So it will be the gradual movement from body to mind, mind to beyond. So whenever our body can change its home, the ultimate thing is not changing. So no jayate, mriyate, vipaschinayang, kutaschinna babhuva kaschit. Ajo nitya shashyato hayang, purano na hanyati hanyamana sharire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, everyone. Thank you, Vendri, for your wonderful discussion about the journey of yoga. Means as a common human being, where they need to start and where they can be through the practice of yoga. We have discussed in detail. I think everyone can be benefited with this thought process. With this thought process, if anyone practice yoga, they can enjoy their life with the happiness, which is our goal of existence. That is, we know that is not part of yoga, but everyone we are asking that is in physical dimension, which is stated by Charvak philosophy. Javat jiving, jivat sukham jiving. Means, as many days we live here, we need to be happy. Yoga also working on that part, on that dimension only. It does not matter how rich you are by wealth or by money. It's all about how rich you are by mind, by the thought process. So, and yoga is a lifelong journey, as Vendri discussed about that. And we know there is a question comes everyone's mind. How many days I should practice yoga? Maharishi Patanjali, in Patanjali Yoga Sutra, he says, Sautu dirgha kala nairantarya satkarah vassevit dhiravim. Means in yoga, if you are willing to stable, you have to practice for a long time. Not like, okay, I have practiced for 3 months or 4 months, and then after that,
okay, I should stop my practice. No, you have to continue your practice. This is a lifelong journey. You are not allowed to stop your practice in between, because this is a way of life. You have to practice the yoga practice entire your life so that you can stay in better mental stage. So hope you all are will practice yoga with your family at your home. In this pandemic situation, this is not over yet, and we hopeful that very soon everything will restore as it was previously. But we have to take care ourselves, and with a very, if you invest your 1 hour or if 2 minutes per hour, if you are investing for your wellness, you can happily may practice 50 minutes yoga in a day. If you practice some asana, some pranayama, some bandha, some mudras, some prayer, then why we do prayer? Because you can see all of the yoga teachers, they are saying about prayer, and chanting. They are doing chanting and all. Maybe you can correlate with this. This is okay with a religious thing. So yeah, I do not belongs to Hinduism or any with this religion. This is not about religion. You can chant your own things also. What is the meaning of definition of mantra? Which is manena tra iti mantra, which protects our mind, that is mantra. So if we practice any mantra, any kind of chanting, so you can get a tremendous power or energy to protect your mind. No one can break it. No one can break the silence of your mind. No one can break the peace of your mind, because peace is the ultimate of everything. In yoga, according to Master Patanjali, yama, there is 5 yamas are there: ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, and aparigraha. First is ahimsa. In yoga, if you indulge yourself, you have to follow the ahimsa, non-harming, non-violence, you can say. So in general way, if we practice non-violence, we can enjoy our existence with the society. So that is the first message towards the mankind. If you indulge yourself in yoga practice, you have to follow the ahimsa or non-violence. And if you follow non-violence, then you are starting your yoga practice. Because in third number row, that is comes asana, then pranayama, then pratyahar, withdrawal of senses from the sensory organs. And if we withdraw our mind from the sensory organs, then we can enjoy our life happily. So this appeal to you all, whoever is watching this video, whoever is joined with us live, to you all, you have to indulge yourself in yoga practice. And we are happy to announce that we are going to publish a digital magazine, and that magazine will be available in our website yogaandhappiness.in, and in our Facebook page you can get the link also. So there is a message from Vendri. So I am going to share that video, that is a video appeal to all of you whoever is joined with Yoga and Happiness. If you are a students of Yoga and Happiness, or if you are associated with Yoga and Happiness, or you have you like our programs and all, so you can participate in that event also. You can send us some writings to put on the magazine. So that message is drafted by Vendri. So
I am going to play that video for all. Institute, Yoga and Happiness is looking towards the overall development of the students and mentors that they can be accomplished of accepting the daily life challenges through body and mind integration. In today's world, more spontaneity you have, more you can try to be resilient. To serve the spontaneous role to the personal and social well-being, our magazine, Yogadam Wave of Life, will be launched on 21st June 2021. The role of the journal is to offer the best knowledge with a desire of creating the capacity to learn and facilitate the holistic united approach. With this publication, the Wave of Life will satisfy a possibility to know the practitioners' yogic community. Like yogic practice, yoga meditation along with writing can create a bridge with body to mind. True yogi and writers echo the transformation of transcendental journey, and journaling powers their wave of euphoria across life. A student or practitioner of yoga and happiness, why we should practice writing? When we write, it helps us to contemplate, absorb, comprehend. Anticipating the reader's query will mature our foreground activity. A writer can offer the very own realizations to the reader's hand portably with a yogic bond. I am overwhelmed to be the part of this endeavor. Sincerely, I want to thank Patron Mr. Shishir Vishwasar for encouraging the effort. My sincere best wish and gratitude to all the members of the editorial team for their tireless effort, and all of the practitioners, participants, and contributors for their contributions. On behalf of Yogadam Wave of Life, I will appeal to all of you to take active involvement and serve it to the society to divine bond to touch the life divine. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityor ma amritam gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, everyone. Stay safe. Thank you for drafting the wonderful message for all of Yoga and Happiness member and students of this organization. And if anyone have any question about this yoga at home and yoga with family, you can put your message so we can discuss about in this format. And in next week also we'll come with a new topic, with the same topic with new discussion, because in this month we are going to organize this yoga. We are celebrating yoga at home and yoga with family, this tagline, because this is the tagline by Ministry of Ayush for the International Day of Yoga 2021. So, and I'm going to and we are happy to announce that 21st June we are going to organize a event, online event only, and we'll notify that soon by tomorrow on our Facebook page. So if you are willing to join, and hopefully we can provide some certificate to you all who will join to that event, and that will be authentic certificate by Ministry on. We are about to collaborate with them, because Yoga and Happiness is a registered under YCB in 2021. So we are going to celebrate that things, and welcome you again for that to join that event. And thank you all. We are going to conclude the session with a Vedic prayer, that is to for all of us happiness, prosperity. Sarve bhavantu sukhinah, sarve
सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, all of you for joining with us who have joined. They are watching on live on Facebook. Thank you all. Okay, live